we know that the formula 1 plus x to the power nc naught plus nc1x plus nc square ncr x to the power r and ncn x to the power n, right? So nc naught, nc1, nc2, x square, x cube. You can see, right? Square is ncr. Coefficient of x to the power n is nc. X to the power 10 is nc10, right? Now we have to use the formula. One value of x is equal to 1, right? On this, so 1 plus 1 is 2, 2 to the power n is nc naught plus nc1 plus nc2 up to ncn, right? So sum of the series starts with value of x is equal to 1, right? On this, so 1 plus 1 is 2, 2 to the okay. So nc naught plus nc1, nc2. If we want to write it down, the form of n is equal to 0 to n. So this will be 2 to the power n. This will be 2 to the power n. 10 CR to 0 to r is equal to 0 to 10, right? With the summation r equal to 0. This value up to 10C10, and this will be 2 to the power 10. Due to some internet issue, maybe voice is not coming properly. Just wait for a minute or two, it will be all right. So if I'm giving you a question on this, r is equal to 0 to 15, 15 CR. Second question, r is equal to 1 to 20, 20 CR. Third, summation 10 CR, r is equal to 1 to 9. And fourth, summation r is equal to 2 to 10 CR. Find values of this. From this,
Okay, so from this one, we can see this. So first one, you have to see this carefully. You have to start with 15C0, 15C1 up to total series is there. So this will be 2 to the power 15. But in the second question, look, we are writing the total series that will be 2 to the power 20, but first number 20C0 is not there. So this is 2 to the power 20 minus 1, right? In third series, first and last two numbers are not there. So this will be 2 to the power 10 minus 10C0, that is 1, minus 10C10, that is 1 again. So 2 to the power 10 minus 2. And the last one, the very important. So we have to start from, right, the series. So this may be 2 to the power 10, but we are missing with two terms, 10C0 and 10C1. We know that 10C0 is nothing but 1, 10C10 is nothing but 10. So this will be 2 to the power 10 minus 11. Everyone write it down. How many of you got all correct? Write down yes, or if not, then write down the number 1, 2, 3, 4, 5. How many you have got there? Okay, so very good, right? We are also in YouTube, right? YouTube live bhi hai. If you want to go there, connectivity issue aa rahi hogi, YouTube live में भी you can go and you can see us, right? हमें वहां पर भी आप देख सकते हो ना. अब ये जैसे फंडा मेरे पास आ गया, राइट? सो लाइक 1 plus x to the power 10, that's 10C0 plus 10C1x plus 10C2 x square up to 10C10 x to the power 10. When you put the value of x is equal to 1, you are getting 2 to the power 10. Let's suppose I'm saying we are putting value of x as minus 1. What if when we are putting value x as minus 1, right? 1 minus 1 will be 0. So this is 0 only. 0 is equals to 10C0 minus 10C1 plus 10C2 up to 10C10, right? Let this is the second one. And when you are putting 1, so already we know this 2 to the power 10 is equal to 10C0 plus 10C1 plus 10C2. Just I'm giving you the example of 10. It may be for any value n, right? You can go with any value n, right? So just example for this. When we'll add this, you are getting twice of 10C0 plus 10C2 plus 10C4 up to 10C10 is equal to 2 to the power 10 divided by 2. So we are getting 2 to the power 9. So when the even terms are coming in place of r, you are getting 2 to the power 9, right? And the same case, when we'll subtract both the equation, right? You are getting 10C1 plus 10C3 plus 10C5 up to 10C9, right? And again, you are getting the same value 2 to the power 9, right? Maybe the sum of the evens, maybe the sum of the odds, right? But it has to start from the number, the first number, and goes up to the last one. First even and last even. Even is 0 and last is the number itself going to the last one, right? So then the answer will be 2 to the power n minus 1. Also, this is called 2 to the power 9 in this case, right? If odd numbers are there, so you have to start with 1 and goes up to, for the case of 10, you have to go up to 9. So you are getting 10C1, 10C3, 10C5 up to 10C9. So 2 to the power 9. In both cases, you are getting answer. Okay. So now means if it is given in a summation form, if I'm writing NC2R or 2NC2R or
start with the number maybe n to n, or with the number like 10, or with the number like 40, anything, right? Let's suppose I'm starting with the number 40 only, and it's going from 0 to 20. So see, what is coming there? 20c naught plus 20c2 up to the last number 20c 40c 40. So we start with 0 and goes up to the complete set of the number. So maybe if it start with 0 and goes up to 40, तो ये number होना चाहिए था 2 to the power 40. But half of the series is there, so you have to divide this by 2. So you are getting 2 to the power 39. And maybe this question could be given as 40c 2r plus 1 r is equal to 0 to 19, right? Like for every question, at least once you have to write it down exactly what is coming there. You have to see 40c1 plus 40c3 up to 40c39. This will be 2 to the power 39. 2 to the power 40 by 2, that is 2 to the power 39, right? So these are the symbolic form, and you have to be careful with the symbolic form. It's given in the form of summation, right? It's given in the form of summation, and you have to be careful with the form of summation, right? Just write down the equation in the form of starting from 0 and goes up to that number. So it will be easier for you, and you can easily you can get the answer, right? This is the second form. First, sum of all the numbers. Second, we are going for half of the number with odd or even. Now, the interesting part is coming. What is the interesting part? See, if I'm saying for 10 only, right? आज के दिन में 10 is your hero, right? 10c0, 10c1, 10c2, up to 10c5, right? So just I'm trying to write down half of the series. Maybe this is half of the series, maybe not half of the series, right? But before starting this, मैं चाहूंगा लास्ट वाले को एक बार आप अच्छे से ध्यान से देख लो. Then only I'll start further, right? After putting -1 and then the sum of the even and sum of the odd. Please, 2 minutes for all of you. Do it fast. This is the third lecture of binomial. Yes, Priyanshu, this is the third lecture of binomial. First lecture, we did the basic of the binomial. And second lecture, obviously, we did the questions on that basic things. And third lecture, we are doing the series. Like you're asking the question, it means this is your, I guess, first lecture. You have not attended last two, I guess. Please reply. Why you are asking this question?
right? See, in the series partner, just you have to go for like all the terms, right? Or the even terms or the odd terms. But now what we are doing is the half of the series, right? Right, half of the series, half of the series, maybe half of the series. Why I'm saying maybe half of the series? See, if it is given 10 C naught, so from where this 10 C naught is coming or 10 C1 is coming, right? Like in binomial, we know that in the expansion of 1 plus x to the power 10, you have to write 10 CR, and this 10 CR denotes this also, right? If I'm writing 10 CR, means this is coming from 1 plus x to the power 10. So this term, if these terms are coming, so 100% we are sure that these terms are coming from the expansion of 1 plus x to the power 10. And if in the expansion of 1 plus x to the power 10, if we are taking all the terms 10C0, 10C1 up to 10C10, right? So what I'm doing, I'm writing each and every term there, right? Careful, 10C3, 10C4, 10C5, okay, 10C5 is there. So this 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9, and 10C10. Why I'm writing this number 10C4 and 10C10? Look into this. 10C4 and 10C10 both are same, right? 10C3 and 10C7 both are same, right? 10C2 and 10C8 both the values are same, equal coefficients are there, right? Very good. 10C1 and 10C9 both will give you the same value. And the last one, 10C0 and 10C10 will give you the same value. But one hero is there that will not give you the same value, right? 10C5, right, is the Amitabh Bachchan standalone. Wow, right? But all the different numbers are coming as this all are coming with 10C0, 10C10 same. And value of this, we know that this is equal to 2 to the power 10, right? So what we can write, see, if we are including these doublet numbers, so we are writing twice of 10C0 plus 10C1 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C4 plus 10C5 is equal to 2 to the power 10. Oh, very good. This is coming two times. Add 10C5 both sides. So what you are getting? Twice of 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 is equal to 2 to the power 10 plus 10C5, right? Divided by 2, 10C0 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C up to 10C5 is equals to 2 to the power 9 plus 10C5 by 2. Please note down, everyone. Yes, Priyanshu. So this is your first lecture you are sitting? Wait for a second.
Note down, everyone. This, when we are doing this, you have to remember, if we are drawing this for 10C0, 10C1, 10C2, so the n is even in this case. If n is even, for the expansion of 1 plus x to the power 10, we know that the total number of term in this case will be 11. And that's the reason we are getting 11 terms, so one odd term is coming there. But in case of when we are taking the example for 9C0, 9C1, 9C2, we know that 1 plus x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 9, 1 plus x to the power 11, 1 plus x to the power 13, or any odd number, total number of term will be even. Total number of terms will be even. So this must be equally divided into two parts, right? So this is the magic of n is even or odd. If n is even, right, power is even, 100% it has to be distributed. We are not able to distribute into two parts because one odd terms will be there, like 10C5. But if n is odd, then it must be divided into two equal parts. Just I'll show you in next example. If you have done, write down yes in chat. And if not, then write down no. So 20, more than 30 answers are coming and they all are saying yes. So hopefully, right? So next I'm saying, obviously, I'll take the example. You know this. I'll take the example for 9. You have to write down this time the half of the series of 9, right? So I'll start with 9C0 plus 9C1 plus 9C2, right, up to 9C4. 9C0 plus 9C1 plus 9C2 plus 9C3 plus 9C4. Always remember, when you are starting from 0, right? When you are starting from 0 and going up to 4, means you have 5 terms, right? 0 is the term, right? That's the reason always try to write down TR plus 1 term, not TR term, because when you'll put the value of R is equal to 0, you'll get the first term, right? That's the reason in binomial you are writing TR plus 1 term. So you have to find this value of this. Now, the interesting part is this. We know that 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C4, and 9C5, 9C6, 9C7, 9C8, and 9C9. Look, 9C4 and 9C5 both will give you the same value. 9C3 and 9C6 will give you the same value. 9C2 and 9C7 will give you the same value. 9C1, 9C8 give you the same values, right? And 9C0, 9C9 will give you the same value. And we know that the value, wow, very good. Answers are coming. Ye hui na baat. If we'll take the complete sum, so this is 2 to the power 9. But if we have to add both the terms and we have to write down 9C0 plus 9C1 plus 9C2 plus 9C3 plus 9C4, this will be 2 to the power 8. Hope everyone is getting this. Very good, Aditya, Sanya, Samarth, very good. Everyone, please note down.
you have not to count these values. If this is 9C minus 1, 9C 10, right? If the R is coming negative or R is coming greater than the number N, right? So you have to discard the value. You have not count these values. You have not count these values. So this, or you can think like these are zeros, right? These values are meaningless, right? You have not to take these values, right? So few of the points are there. So starting from the basic of class, today's class, right? What we did, right? First, the expansion, we know that anything x to the power 2 is coming. So x to the power 2, the coefficient will be NC2, means x to the power r is coming, that will be NCR. If you'll put value of x is equal to 1, you are getting 2 to the power n. The complete series will be 2 to the power n, right? And if you are putting -1, if few terms are not given, so you have to subtract the values, right? You have to subtract the values in that case, right? When you are putting x is equal to -1, so the answer you are getting is 0. When you'll use plus and minus both, the -1 and +1, right? Positive and negative, right? So positive and negative. So when you'll add this, you are getting the number. When you'll subtract this, you are getting the number. That will be divided by 2. So 2 to the power n minus 1. So few questions we did on that, right? कि even होंगे, odd होंगे. This is the sum of the coefficients, right? Sum of the coefficient of even term, sum of the coefficient of odd term. Now it started a new story from this line, like half of the series is given, right? Half of the series is given, not necessarily the complete one. If half of the series is given, then how will manage this series, right? Or how we'll write down the answer. So for that, we have taken this as two part. When n is even is one of the part. When n is even, total number of term will be 11, right? Total number of term will be 11. So this is not going for completely half of the series. So we have to manage one number, the middle one, 10C5. It may be the plus or minus in that way. You have to see कि कहाँ तक series जा रहे हैं. But if n is odd, जब ये वाली numbers हमारे पास odd हो गए, so we know that this will divide into two parts. So this is the number, right? So, right, and icing of the cake, when you have to write down this, so you have to remember this number, right? ये दोनों चीजें ख्याल पे रखना कि ये दोनों चीजें नहीं रहनी है, राइट? इनको डिस्कार्ड करना है, मींस आपको वैल्यूज जो लेने हैं वो जीरो, आप जो वैल्यूज ले रहे हो वो भी चलेगा, राइट? आपने जीरो वैल्यूज लेने हैं, जीरो भी आप ले सकते हो, राइट? सो नाउ story starts, right? Anyone want to ask anything? Please raise your hand. आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, बहुत डिटेल में मैंने बताया, रिवाइज भी करवा दिया है. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, राइट? फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू स्टार्ट. सी
Done, everyone? Write down the answers. कंप्लीट 8 के साथ में लिखने हैं, 1 by 1 मत. Not 1 by 1, complete one. Write down all 8 answers. Aditya, very good. Vraj, very good.
Last 2 minutes. Okay, let's start. Very good, Samarth. Shikhar, very good. देवांश, अभी देख लेते हैं बेटा. Let's start. First question. It's not going half of the series, right? What it's going? R is equal to 0 to 4. So the numbers are 10C naught plus 10C1 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C4. And then you have to write down answer of this. We have already seen that for 10, it's 10C naught up to this, right? We required answer for this, right? So this you have to transfer there. So this would be 2 to the power 10 minus 10C5, right? And this is coming twice, right? So divided by 2. So answer of first one will be 2 to the power 10 minus 10C5 divided by 2. How many of you are getting this right? Write down yes in chat, please. If anyone not getting this, let me know. Oh, great, great, great.
So now the second question, 20CR, if it's started from 0 and going up to 20, so the answer would be 2 to the power 20. But two terms are missing, 20C0 and 20C20, and value of these two will be 1 and 1, that's 2. Right? Okay, third. So it's 40 CR, R is equal to 0 to 10, right? So obviously you are not able to find the complete value on this part, right? मैंने जानबूझ के एक वैल्यू दे दी, अगर मैं 10 तक ही जा रहा हूँ, राइट, तो 40C1 to 40C10, राइट, ये हाफ सीरीज नहीं है, 1/4 सीरीज है, 1/4 सीरीज है. सो इस फॉर्म में हम लोग ये आंसर नहीं लिख सकते, कोई और फॉर्म होगा जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं की है. सो इसके लिए अगर किसी ने भी आंसर लिखा है तो दिस विल नॉट वर्क, राइट. अभी आपने जितना पढ़ा है आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. R is equal to 0 to 12, right? 13 terms, 0 to 12, and 25CR is total number of terms will be 26. So again, this is 2 to the power 24, right? 13 completely going 2 to the power 29, right? 0, this will be -1, that will not work, so I have to start from 1. So at 1, 30C1 plus 30C3 up to 15, 30, right? 30 minus 1 is 29, so half of the 3 is 2 to the power 29 again. R is 0, starting with 1, and 50 plus 1, 51. So this will not go there. So this will go up to 24. So this will be 2 to the power 49, right? R at 1, 25C1, 26 minus 1 will be 25, 2 to the power 24. So how many of you got all correct, or write down the number what you are getting or what you are not getting? जो भी गलत हुए हों उसको छोड़कर जितने नंबर्स आपने सही किए, अगर पूरे करेक्ट है तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं तो प्लीज लेट मी नो. अरे वाह, वेरी गुड. लिखित, लिखित, डन. लिखित कितना किया? अबान, ऐश्वर्या, ऑस्टिन, दुर्गेश, केविंदर, कृष्णा, मानव, निलय, प्रत्युष, ऑल करेक्ट. रनक, सलोनी, समरूप, Raj, okay, so let's start. Piansu, is it okay? Anyone want to ask any question? Write down the number now. कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए? अधिक मैं एक्सप्लेन करूं क्योंकि कुछ लोगों के एक दो गलत हो रहे हैं, राइट? तो इफ यू वांट आई हैव टू एक्सप्लेन समथिंग. Second one, 2 to the power 20 minus 40. Why 40? The first term will be 20C0 and last term is 20C20. Value of 20C0 is 1, value of 20C20
is 1 again, right? 30C, this question. Right, 30C 2R minus 1 started with 0, right? Okay, write down 30C minus 1, 30C 1, 30C 3, up to 30C 29, right? So we have to discard this, you discard here. So the rest of the number is giving all the odd numbers starting from 1 and goes up to 29. So this will be 30 minus 1, 2 to the power 29. Okay. Seventh one, again the same thing. 50C not going up to 50C 51. You have to discard 50C 51. So it's going up to 50C 49. Okay. Now, so this is about like the series, the complete series starting from even or odd, right? That you have to take care. Now we are starting, before starting the series for binomial included with arithmetic progression, geometrical progression, harmonical progression, or the different things. You have to remember few formulas, right? First, NCR is equal to N upon R, N minus 1, CR minus 1. First formula you have to remember. Second, N plus 1 by R plus 1, the reverse of the above formula, into NCR is equal to N plus 1 CR plus 1, right? NCR plus NCR plus 1 will be N plus 1 CR plus 1. NCA is equal to NCB, then either A is equals to B or A plus B is equal to N. Write down, आगे फिर करता हूं. N minus R plus 1 upon R. All the 5 formulas. And if done, write down done in chat.
So these are the very, very, very essential formula when you have to solve the series question, right? Now we are starting the series question with AP bino series. AP means arithmetic progression. Arithmetic progression binomial series, right? Arithmetic progression and binomial series. So how to go for this, right? Arithmetic progression and binomial series. First, we have to understand exactly what is this series, right? This series दिखेगा कैसा, होगा कैसा, right? कैसे पता चलेगा क्या है? So एक सीरीज मैंने लिखा S is equal to A into NC naught plus A plus D into NC1 plus A plus 2D into NC2 up to A plus ND into NCN. ध्यान से देखो, ये A, ये A प्लस डी, ये A प्लस 2D, ये A प्लस ND, ये AP है, एंड NC नॉट, NC1, NC2, NCN ये बाइनोमियल है. That's the reason this is known as AP binomial series. इसे सॉल्व करने के कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट? फर्स्ट मेथड वी आर डूइंग द बेसिक फॉर्मूला मेथड. ना, क्या बेसिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान से देखना. वी नो दिस कि अगर मेरे पास समेशन हो एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0 to n, so answer will be 2 to the power n, right? But if I'm writing r is equal to 0 to n, r into ncr, if I'm writing r into ncr, right? अब दिक्कत क्या है इस सीरीज में कि r इज वेरिएबल एज वेल एज ncr इज वेरिएबल, ये दोनों ही वेरिएबल हैं. अब ये दोनों अगर वेरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए थोड़ी सी गड़बड़ है. मैं दोनों को अलग अलग सीरीज तो लगा नहीं सकता. मतलब ऐसा तो नहीं है कि आर को अलग से लगा दूं और एनसीआर को अलग से लगा लूं, क्योंकि दोनों एक साथ में ही वेरी कर रहे हैं. सो व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व. तो उसके लिए हमने जो अभी फॉर्मूलाज देखा था उस फॉर्मूला को लगाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस फॉर्मूला को कैसे वर्क करवा सकता हूँ, राइट? सो व्हाट आई एम राइटिंग, जो मेरे पास यहाँ एनसीआर है, right? NCR के लिए we know the formula n upon r, n minus 1 CR minus 1, right? So this is summation r is equal to 0 to n, r into n by r, n minus 1 CR minus 1. So in this case, r cancel with r. Now n is constant. यहाँ वेरिएबल r है, राइट? r को मैं बाहर नहीं निकाल सकता था, बट n पर वेरिएशन नहीं है, सो n यहाँ पर कांस्टेंट है. n को मैंने बाहर ले लिया. r इज इक्वल टू 0 टू n, n माइनस 1 CR माइनस 1. ध्यान से क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि व्हेन यू विल स्टार्ट विद 0, दिस विल बी माइनस 1, सो वी हैव टू डिस्कार्ड एंड राइट डाउन 1, राइट? मैंने उसे 1 लिख दिया. सो अब 1 से स्टार्ट होगा तो n माइनस 1 सी नॉट, n माइनस 1 सी एन, और लास्ट टर्म n माइनस 1 सी एन माइनस 1, मीन्स कंप्लीट टर्म्स आर कमिंग जो भी मुझे चाहिए. ये पूरा का पूरा सीरीज तो वही है, बट पावर जो है इसमें वो हो जाना चाहिए था मेरे पास n माइनस 1. So 2 into 2 to the power n minus 1, answer for this question. Clap, 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 clap करो, clap करो और नोट कर लो आप क्लैप करने के बाद.
बेसिक फॉर्मूला को यूज करते हुए राइट वी आर एबल टू फाइंड आउट हाउ दिस इज कमिंग. This, and if we are writing n into r का summation, r is equal to 1 to 10, right? So obviously r is variable, n is constant, so we can take out n outside, and this is 1 to 10 r. या अगर नहीं भी ले रहे हो तो n तो हमेशा वही नंबर आ रहे हैं, 1 into n, 2 into n and 10 into n, तो n will be common out. सेम here, राइट, n पहले से मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद r का समेशन लगा रहा हूं, राइट. तो दैट्स द रीजन n इज कॉमन आउट फ्रॉम दैट, राइट, क्योंकि वेरिएशन जो है, जो वेरिएबल है वो r है, वेरिएबल n नहीं है, राइट. सो इफ आई एम राइटिंग समेशन r स्क्वायर r is equal to 0 to n NCR, मान लो मैंने r is equal to 0 ले लिया, फर्स्ट टर्म विल बी 0, सो नो वरी, सॉल्व करके दिखाता हूं एग्जैक्टली हाउ वी हैव टू गो. आई एम सेइंग कि ओके, दिस इज समेशन r is equal to 0 to n r square n upon r n minus 1 c r minus 1, r square cancel out, so n will be common out from this summation r into n minus 1 r minus 1 r is equal to 0 to n. Now I have to cancel out this r minus 1. If again I'll apply the formula and I'll take out n minus 1 by r minus 1, but this r is not going to be cancelled out with this r minus 1. So forcefully we have to write this r minus 1, we have to just make this r minus 1. So now I'm writing minus 1, so I have to add the number. See, r minus 1, r is equal to 0 to n. So from both this, what we have to do, n into summation r is equal to 0 to n, r minus 1, n minus 1 upon r minus 1, n minus 2 c r minus 2 plus n into summation r is equal to 0 to n, n minus 1 c r minus 1. Look into this, ये वाले को देखता हूं, r minus 1 कैंसिल हो गया, n minus 1 कॉमन आउट, n into n minus 1 कॉमन आउट, summation r is equal to 0 to n, n minus 2 c r minus 2 plus n is common out from this, r is equal to 0 to n, n minus 1 c r minus 1. Please note down up to this, then we'll discuss further like इसके बाद क्या होगा. एंड पहले मैंने r स्क्वायर था, राइट, फर्स्ट स्टेप मैंने ये रखा कि जो भी n by r was given, so I'm taking out n by r common, so one r will be cancelling out, right. Second step में r, now if I'll take out n minus 1 by r minus 1 common, this r minus 1 was not able to cancel out r, so I have subtracted 1. भाई उधारी ली तो ये डेप्ट को यहाँ मैंने वापस किया, मैंने ऐड किया नंबर्स को, राइट. So now
Now I can take n minus 1 by r minus 1 common. So I'm taking this n minus 1 r minus 1 common. So with the formula, this will reduces by 1 unit both. So n minus 2 c r minus 2, right? N minus 2 c r minus 2. And this was the same thing I have written. And the last line is this one. Hope clear to everyone. Okay, now you have to write down the answer of this. Everyone try to write down the answer. This is constant n into n minus 1. What you have to write for this, plus this is constant and you have to write the answer for this. Do it fast. If I'll start from 0, this will be minus 2. At 1, this will be minus 1. So this is starting with 2. And then n minus 2 c naught, n minus 2 c1 up to n minus 2 c. Very good. 2 to the power n minus 2, right? But in this case, r is equal to 0 minus 1. So it has to start from 1 and going up to n. So this is 2 to the power n minus 1. So we can take out common as n into 2 to the power n minus 1. It is coming n minus 1 plus 2. This will be n plus 1. So n plus 1 into 2 to the power n minus 1 is the answer. Okay. Okay, everyone. So if okay, then go for 2r square plus r plus 2 into ncr. R is equal to 0 to n. Go for this. सर वो पिछले वाले क्वेश्चन नहीं, वो पिछले वाले फॉर्मूला में आपने 2 n minus 1 के अलावा 2 n minus 2 लिखना है ना, वो ब्रैकेट के बाहर लास्ट वाले स्टेप में. What is the power of this? इसमें क्या है इसको आपको स्टार्ट करनी है n minus 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो या n minus 1 के लिए? n n minus 2 minus के लिए वन. n minus 2 ना. अरे this is n minus 2 or n minus 1, the red one, the yellow one, हाँ वो highlighter. n minus 2 है. n minus 2, what is the meaning of this? याद करो आज के फर्स्ट सेशन में ही we have started with अगर n था तब ये n आ रहा है, राइट? अगर n की जगह n हाँ. minus 1 रहेगा तो minus 1 आएगा, n की जगह n minus 2 रहेगा तो यहाँ n minus 2 आया है. मतलब यहाँ पर अगर n minus 2 पूरे टर्म्स में आ रहे हैं तो ये एक्सपेंशन किसका था? n minus 2 का एक्सपेंशन था. और अगर ये n minus 2 का है तो और क्या आना चाहिए? वो 2 to the n power minus. n minus 2 आना चाहिए, हाँ सर. right? Does it? I did that. ठीक है सर, समझा. है जी, है जी. हाँ सर, ठीक है. Now this question, do it fast, everyone.
Savani, are you there? Aditya, very good. Aditya, very good. Okay, you can use the formulas जो ऊपर यूज किया उसे यूज कर सकते हो, या फिर ध्यान से देखना आंसर लिखने का ट्रिक एंड टेक्निक, राइट? 0 to n summation r is equal to 0 to n, 2 is common out, r square minus r, मैंने अपने मन से माइनस r कर दिया, ncr plus 3r, right? r is equal to 0 to n plus 2 common, this will be ncr, r is equal to 0 to n. Right? So this is 2 into this, I can write summation r is equal to 0 to n, or r minus 1 common out. So this will be n minus 1, n minus 2 cr minus 2 plus 3 times n common out. This is n minus 1 cr minus 1, r is equal to 0 to n, right? Plus 2 summation r is equal to 0 to n ncr, right? Now I can directly write the answer as 2n n minus 1, 2 to the power n minus 2 plus 3n 2 to the power n minus 1 plus 2 into 2 to the power n. What we can take out common? 2 to the power n minus 1 common out. This is n square minus n plus 3n plus 4. So complete answer is coming as this. Everyone, right? Be careful. Just you can directly use the formulas. If it is r square minus r, just take out the common n and minus 1. Directly you are getting the answer. Note down, please. First method. This is the first method, what we are doing.
Shikhar, your answer you have written, that's this step is there, right? Match your answer. And n plus 1 you have written, this would be n, right? So I hope everyone is getting this, and this time you have to rock. Fast. Do it fast, everyone. Do it fast.
It's a simple thing, right? R square minus R plus 4R, right? Now I'm trying to write down direct answer. N minus 1, 2 to the power n minus 2 plus 4 into 2 to the power n minus 1 plus 4 into 2 to the power n. ये तो बनता है यार, एक क्लैप तो बनता है. राइट, एक क्लैप तो बनता है सभी का. सही है. सो डायरेक्ट यू कैन राइट डाउन द आंसर. शुरुआत कहाँ से हुई वो भूल जाओ कि वो स्टेप वाइज तो मेरे को करना ही है. आई हैव टू गो विद द स्टेप्स, राइट. आर स्क्वायर माइनस आर को जब एन सी आर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो एन एन माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 2. अब इतनी बार हो चुका है कि आई डोंट थिंक कि गड़बड़ जाएगी. 4 को बाहर रहने दिया. आर इंटू एन सी आर इज नथिंग बट 2 टू द पावर एन इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1, राइट. 4 को मैंने बाहर रखा, राइट. 2 टू द पावर एन. खत्म. Is it okay? Right? So now your turn. Right? यही मैजिक आपको करके दिखाने हैं with summation r is equal to 0 to n 2r square plus 3r plus 5 into ncr. Do it fast. Okay, see, 2 r square minus r plus 5r plus 5 into ncr. R is equal to 0 to n. 2 into n minus 1, 2 to the power n minus 2, 5 into n into 2 to the power n minus 1, 5 into 2 to the power n. Right? So you can take out common as 2 to the power n minus 1 from this. This is n square minus n plus 5n plus 10. 2 to the power n minus 1, n square plus 4n plus 10. Hope everyone is getting this. Raj, very good. Everyone, very good. Right? So this is the first method, as I said. Right? Now, when we have to solve for question, right, for NCR or this thing, the method 2, second method,
I guess done, everyone. See, this is called differentiation method. Hope you all know differentiation, right? All you know differentiation. Then how to go with the differentiation method, right? Like it is given 1 plus x to the power n, nc naught plus nc1x plus nc2x square up to ncn x to the power n. Suppose I'm giving you the question like 2 into nc naught plus 3 into nc1 plus 4 into nc2 up to last term n plus 2 into ncn, right? Summation of this. So what we have to do, you have to differentiate both the side, but you have to be careful, right? First multiply x square nc naught plus nc1 x cube up to ncn x to the power n plus 2, right? Differentiation, everyone know this, right? Differentiation in product form, 2x 1 plus x to the power n plus n 1 plus x to the power n minus 1 into x square, and the differentiation of right side will be 2x nc naught plus 3x square nc1 up to n plus 2 ncn x to the power n plus 1, right? Put x is equal to 1 both sides. You're getting 2 into 2 to the power n plus n into 2 to the power n minus 1 is equals to 2 into nc naught plus 3 into nc1 up to n plus 2 into ncn. This answer you are getting. Please note down. Use of differentiation for, but you'll do this method like in class 12, you'll be more fluent and like more aggressively you'll do this method, because that time you will be like studying differentiation. Differentiation is one of the topic, it's a multi-purpose topic. So one of the use of differentiation in series. I'm here. We can start with the function, and then function and domain and range. After that, we have to study differentiation. In that way, we'll do that, right? So, Vraj, you want to ask something? Yes, please. Sir, after कौन that, बजा रहा you था? have to differentiate, na, sir. Oh, sir, x square plus 1 plus x raised to n. Differentiate क्या ना, sir, उसके बाद? प्रोडक्ट रूल होता है ना डेरिवेटिव का. हाँ, sir, वो. पहले एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को छोड़ दिया, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया. दैट्स अ प्रोडक्ट रूल आई हैव यूज्ड. Yes, sir. Okay. So this is the second method, right? But I guess you'll love the third one. जो सीरीज था बड़ा सा था, गंदा सा था, उसी सीरीज को देखते हैं हम लोग, राइट? उसी सीरीज को सॉल्व करना. बट दिस इज स्पेशली फॉर एपी बाइनोमियल सीरीज, राइट? व्हाट आई एम टीचिंग is for AP binomial series. The question was this.
This was the question, right? AP binomial series. How to solve this? Look, last term given है NCN, right? What I'm doing, मैंने फिर से यही S लिखा, and what I'm doing, मैं कर क्या रहा हूँ कि just I'm writing down the last term, then second last term, and the first term, right? But we know that this n is same as nc naught, this n minus nc n minus 1 is same as nc1, and ncn is same as nc naught is same as ncn, right? So I'm writing something like this, right? When I just reverse here, we have started with initial to last and just write down the numbers what is given there, right? मैंने उसे सीधा का सीधा लिख दिया. अब right now add both this, दोनों को ऐड करता हूं, देखो क्या आ रहा है. 2s is equals to 2a plus nd. अगर ध्यान से देखो तो हर एक टर्म में 2a plus nd आ रहा है, इसमें भी आएगा, राइट? Yes, sir. अगर मैंने वो कॉमन ले लिया, nc naught nc1 up to ncn is there, right? So this 2s is equal to 2a plus nd into 2 to the power n. 2 obviously cancelling this. So s is equal to 2a plus nd into 2 to the power n minus 1. So you are getting this answer. Hope everyone getting this. ये simple method हो सकता है, but इसी method को मैं mathematically बड़े प्यार से और करूँगा. So like note down this one and remember this, right? Then I'm doing the next one. Okay, done. Look, in the question it was given S is equals to summation A plus RD
into NCR, R is equal to 0 to N, right? R is equal to 0 to N, A plus RD NCR, right? Again, I'm writing this S and just writing N minus R is in place of R. Understand this point. If I'm saying I have to add the number 1, 2, 3, 4 up to 100, or let's start it from 0, 0 to 100. If I'm adding this number from 100 to 0 or 0 to 100, is anything difference in this? ये दोनों में क्या कोई difference हो सकता है? No, sir. This means you are saying summation of R. In this, you are saying summation of N minus R or 100 minus R. Both are same, right? Both are same in that way, right? So if I'm writing N minus R in place of each and every R, there isn't any problem, right? And we know this, if this N minus R is given, right, this NC N minus R, the property of binomial is, we can write NC N minus R is same as NCR, right? NCR. Add both this to S is equal to summation 2A plus ND into NCR. Look, this is constant, independent of R. So you can take out common, 2A plus ND is common, and this is 2 to the power N. And when divided by 2, this will be 2 to the power N minus 1. Without like any expansion and all, you can directly find out the answer. Okay, everyone. This is especially for the series when you can transfer this R to N minus R. This is a very, very, very useful tips for the questions, right? Please note down. Anyone want to ask anything in this entire lecture? Most welcome. वैक्सीन भी अब आ गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्दी सबको लगेगा वैक्सीन। तो किसने को ली वैक्सीन? यस सर। क्या बोल रहा है? तो किसने बनाई वैक्सीन? किसने बनाई वैक्सीन? ये लग जाए वो बहुत है बेटा, क्या करेगा किसने बनाई से? डॉक्टर ने किसने बनाया? पढ़ने को आएगा ना सर थोड़ा सालों में। अच्छा, डॉक्टर सम्मान करेगा सर। उसकी पूजा उतारेंगे, आरती करेंगे उसकी सर। हाँ सर, क्लासेस खुल गया सर उसके वजह से। कब खुल रहा है सर? सर जैसे ही वैक्सीन लगा मैं अपना मास्क। बोल पढ़ाई शुरू हो गई इसकी वजह से। क्लासेस तो हमारे खुले ही में है, क्लासेस कहाँ पर? मतलब बच्चों को बुला के पढ़ना। नहीं सर, मतलब क्लासेस में आके पढ़ सके ना सर वैसा। हाँ सर। अच्छा हाँ, कुछ समझ में आया हमें भी। हाँ सर, हमें भी कुछ समझ आया। हमें भी कुछ समझ आया मतलब? सर उसकी अभी नहीं समझ रहा तुझे? अभी ज्यादा समझेगा, तब ज्यादा समझेगा। हाँ सर, तब ग्रास्प रेट अच्छा रहता है सर। अरे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया कर, आधा समझ में आया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा पूरा हो जाएगा। 2 बार वीडियो देख लिया कर। वाह सर वाह। मेरे तो अभी तो क्लासेस में चल रहे ना, आओ तो फिर ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे जोक मारूंगा ना, रोने लग जाओगे। सर हम भी कम नहीं है। हाँ सर, नहीं हाँ, सही बोल। तो एक चल जोक सुना, हटा सब कुछ। सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। सर बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाती है। सर रोटी खाने से क्या होता है? सर ये सब लाइव जा रहे हैं। हम बड़े हो जाते हैं। सब्जी बचती है। ये सब लाइव जा रही बता रहा है। अरे सॉरी सर।
सर जो देख रहा था वो बोलेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। वही सबसे बड़ा जो हो गया। ये अनय सबसे बड़ा गड़बड़ आदमी है, नहीं समझ में आ गया। कहने को लगा कि अभी ये कुछ ना कुछ जोक में ट्विस्ट मारेगा, बोला लाइव जा रही है, मत बोलना आगे। सर प्रिकॉशन। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, घबरा मत। सर हाँ। बट वो लाइव करके आ रहा है। सर लाइव तो जा रहा है ना। बाय सर। अरे मैंने बोला था आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछ लो, तुम लोग तो अपने लाइफ के डाउट पूछने लग गए। सर वही एक ही डाउट है कोई और क्या बाय बोल सकते दिया। हैं। सर और क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है क्या अभी सॉल्व? कौन सा? सर जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना वो 40C10 वाला। नहीं बेटा, वो तो अभी सर। क्या कभी होगा। मैं तो केवल उसके लिए दिया था कि बाय जबरदस्ती सर, थैंक यू सर। बहानाओं पे बह के कुछ आंसर शिखर को बहुत जल्दी जाने की। 4 बजे से फिर क्लास से जा रहा हूँ। सर एक और क्लास है 4 बजे। नाश्ता कर ले एक और शांति क्लास से। है। क्या 4 बजे से? हाँ सर। हाँ। आधा घंटा। हाँ सर। खाना खा लो, सब लोग खाना खा लो। हाँ के बैठ। खाली सर। खा के बैठते सर। पापा लेक्चर के बीच में। सर अभी 30 मिनट में एक और लेक्चर मैं है। नहीं खाया सर, मैं खाता हूँ सर, अभी जाता हूँ। 20 मिनट बाकी है भाई। सर आप हेमंत सर को हाँ, बोलो वही, 15 वही। मिनट लेट चालू करे। नहा लो सब लोग। सर आप नहीं नहीं सर सर, वैसे भी चलेगा लेट ही चलेगा, चालू 4 करते उसमें हैं। बोलने की नहीं जरूरत सर, नहीं चलेगा, है। ये 4 बजे आईडी हेमंत सर। अरे बट एक अरे बार नहीं सर, अपनी मीटिंग रूम ही 15 मिनट बाद चालू करते हैं। अरे बट एक और- बार हाँ वो भी है। अरे बट सर अभी मस्त सो रहे होंगे। वही तो। अभी मीरा रोड में है सर। अभी हाँ, मैं- अरे भाई सर वो हाय कोई तो सर। है ना हम लोग के ग्रुप में से भी, मीरा रोड वाला। अरे मैं हूँ भाई। बस बस। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सर ये सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस कहाँ पर हैं? हाँ मतलब ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे ना कहीं तो? बाइनोमियल में रहेगा ना बेटा। बुक में है ना सर, ऐसे पूछ रहा था मैं। अरे हो, बुक देखा नहीं तुमने क्या? सर मतलब आपने बोला था कि वो, तो मैंने होम असाइनमेंट थोड़ा देखा था बट उसके आगे कुछ क्वेश्चंस नहीं हुआ तो छोड़ दिया था, और फिर आपका जो एक असाइनमेंट मिला था वो किया। तो पूरा देख लो। हाँ भी सर। इसमें आएगा क्लास में जीपी बाइनोमियल सीरीज आएगा, उसके बाद एचपी बाइनोमियल सीरीज आएगा, फिर बाइनोमियल सीरीज आएगा, फिर बाइनोमियल आएगा कॉम्प्लेक्स। क्या इतना हंस क्यों रहा है? दांत गिर जाएगा। कुछ नहीं सर, अजीब लग रहा था। हाँ? क्या अजीब लग रहा था, बाइनोमियल सीरीज ही। सर मैं बोलता हूँ बाइनो सीरीज। वही सोचा था सर अपने दिमाग में, बाइनोमियल। कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दिया हूँ बाय सर। बाय बाय। सॉरी, मैं आदत खराब है मेरी, मैं आवाज मिलाने लग जाता हूँ। चलेगा सर। हाँ, वो बाइनो कॉम्पो सीरीज, फिर बाइनोमियल के साथ में पॉलिनोमियल की सीरीज, काफी कुछ होता है इस पे। एक बार जस्ट अभी स्टार्टिंग का है ना सर। ये तो निकाल ही दिया ना शायद से अभी बोर्ड्स के सिलेबस से, बाइनोमियल निकाल दिया था इस बार तो। अरे नहीं सीबीएसई में है। तो बोर्ड के हमें लिए तो है मत- भाई। सर जेई के लिए पढ़ने का, बोर्ड्स के लिए नहीं सर। वही जेई के लिए तो पढ़ना ही है। सही बात है। अनय, तू बोर्ड का कंप्लीट करेगा? क्या सर? बोर्ड का कंप्लीट रखेगा पूरा? नहीं सर, मैं सब पढ़ेगा सर, आप टेंशन मत लो। मैंने तेरे पापा टेंशन लेंगे और उसके बाद कितना टेंशन तेरे को देंगे ये समझ ले। नहीं नहीं, नहीं, हाँ बाय बाय बाय। मैंने तेरे दुखते रख पे हाथ रख दिया। चलो बाय एवरीवन। बाय सर। हाँ सर आप वो 2 दिसंबर के लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, मैंने पूरा सर्च किया। हाँ सर, मेरे को भी नहीं मिली। रिकॉर्डिंग को ना देना थोड़ा सा बंद कर दिया हूँ, रीजन बताता हूँ उसका। क्योंकि काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ ना कि लाइव लेक्चर के समय ना
कभी भी उठ के चले जाते हैं, लाइव लेक्चर नहीं देख रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना आदत मतलब कहीं ना कहीं मैं कैसे रोकूं, मेरे को समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा सर आप धीरे धीरे वीडियो ऑन लेक्चर ना। करा सर आप वीडियो ऑन करा लो ना पूरे लेक्चर के लिए, हम तो कर लेंगे ऑन। सर आप वीडियो ऑन तेरे को करा। वीडियो ऑन करना, उसके बाद में मेरे को वीडियो ऑन भी करके तेरे को ये करना पड़ेगा, एंड उसके साथ में मेरे को वीडियो भी बार बार देखते रहो सबके, राइट। कितने का वीडियो देखेगा, कौन बैठा है नहीं बैठा है, सर वो तो अब अपने मैं तो ऊपर है फिर ना, ऑनेस्टी के ऊपर है। मैं तो ऑन करके बैठ जाऊंगा सर, आप बोलोगे तो। मैं तभी भी एंड तक वो देख लो सर। आदित्य भी बैठा है एंड तक, अनय भी बैठा है। स्कूल का वीडियो ऑन करके मतलब बातें अच्छी लगती है यार सर की सुनने में। हाँ सर, हम और क्या बैठ जाते हैं हर लेक्चर में एंड तक। अभी तक देखो हम लोग सर बैठे हुए हैं, सब चले गए। वो सर मेरा ऊपर का स्क्रीन टूटा इसलिए वो लीव बटन दबता नहीं है सर। इसलिए मैं लास्ट तक बैठता हूँ जब तक नहीं, होस्ट नहीं। मीटिंग एंड नहीं करता। लास्ट क्लास में जो मेरा क्लास था जिसका बोल रहा है 2 दिसंबर का, उसमें तू क्लास में था ही नहीं। कौन मैं? उसके रिकॉर्डिंग अभी भेजता हूँ, उसे देखना। लास्ट में मैं 4 बार बोला अनय मैं, तो सर मैं वॉशरूम गया हूँ तभी मैं था। ये वाला सबसे अच्छा नहीं, वॉशरूम गारंटी गया। सर, मैं सचमुच था। इस फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करे, नो गारंटी प्लीज। सर मैं था सर, गारंटी सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्या का नाम लिया था, एक तेरा और एक और था कोई, ये 3 का नाम मैंने लिया था और तीनों लोग नहीं थे। मेरे को समझ में आ गया गेम खेल रहा है या तो, या फिर धीरे से। मेरे मोबाइल में सर गेम ही नहीं है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर सबकी। था सर सचमुच। हेमंत शर्मा के लेक्चर में, हेमंत सर के लेक्चर में अनय था ना। क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहे हो? मैं नहीं था, मैं सब लेक्चर कोई बैठता तो है। कॉल ऑफ ड्यूटी के। अरे अखिल राम अरे वो अखिल राम था भाई, वो मेरा नाम क्यों ले रहा है? अरे नहीं यार, भूल गया, ए से था ना यार, सॉरी। अखिल राम था।